polluted not only because of the discharge of pollution from the industries, but also from the cities, from the towns where we live. So if you just take a a small case of Delhi, we have 17 drains in Delhi, जिसे हम नाला कहते हैं. So these 70 out of these 17 drains, Najafgarh drain happens to be the largest drain, and that contributes to 70% of pollution to River Yamuna. It brings industrial as well as domestic wastewater directly into River Yamuna, and this Yamuna then flows towards Mathura and Agra, where the water from the Yamuna is taken out and it is supplied after giving some treatment to the residents of Mathura and Agra. So one can imagine the situation with the help of this small example, that the industrial effluents, as you know, is very dangerous, very harmful when you compare with the domestic wastewater. Because you never know in the industrial effluent what does it contains. It may contain heavy metals, it may contain inorganic substances. So, and there is no analysis, there is no like control over the discharge, what is being thrown away into the drain. And surprisingly, this Najafgarh drain, which is very popular in Delhi, if you go to Delhi, or is someone from Delhi in this program, this drain was not a drain historically. It was a river which originates from Rajasthan. So now it has been converted into a drain because it is receiving dirty water from the households, from the industries, and then it is discharged, or it outfalls into River Yamuna. Just a second, I'll also put my video. Yes. So this is the scenario, and rivers or any water body is indirectly or directly, it is a lifeline for us, for our survival, because we take a lot of water for our drinking purpose from these large water bodies, natural resource. So this is the case of River Yamuna, and River Yamuna is tributary of River Ganges. So one can imagine the gravity of the situation, that what we are basically doing with the water, with the natural resource, that we are discharging untreated domestic wastewater and industrial effluents directly into the nalas outfalling into the tributaries, and these tributaries are merging, are outfalling finally into the main stem, and that is basically River Ganga. So this is very normal scenario in northern part of the country in India, and same is the situation in south also. Like in Hyderabad, Musi River is there, which is flowing in the middle of the town, and a lot of solid waste is being dumped into Musi River. And downstream, 56 kilometers from Hyderabad, there is a city, and that city takes this water for drinking purpose for the entire population of that city. So what is important to note in this particular slide, that we have heard about the waterborne diseases. So what are waterborne diseases? This is the source, indirect source, because you don't know. People in Mathura, people in Agra, when I was talking to them, they have no idea that the water which they are getting, it is from River Yamuna, and River Yamuna is already polluted upstream in Delhi and maybe in Haryana further upstream. So that is the situation, and it is very pathetic situation if you consider, and the whole
like ecology of the system of the environment is related to all of these things. यही चीज रेनफॉल करती है, यही चीज फ्लोरा फोना को बनाती है. This is responsible for aquatic life. Fish survival is also important. Fish cannot survive in this situation. When it is dirty water, where we don't have dissolved oxygen in the water, fish survival is not possible. Fish wants dissolved oxygen, fresh, not fresh water, but water which has a dissolved oxygen. Now, these are some more pictures you can see, and it is similar wherever you go. But whether it is Meerut, Moradabad, or Hyderabad, Delhi, or near Mumbai, Pune, wherever you go, Kolkata, I have seen similar kind of situation. The solid waste is being dumped on the shoreline areas of the rivers, and untreated domestic and industrial wastewater is being discharged into the main course of the rivers or the nalas. Now, if I talk something about the national scheme that was basically aimed to rejuvenate river Ganga. So we have a very big Ganga basin, and the total length of river Ganga is about 2,500 kilometers. It originates from Himalayan regions and Gangotri, and it travels and passes through 7 states of northern part of India, and finally enters into the border of Bangladesh. Now, and this is very sacred river. We call it holy river. So not only a holy river, it also helping us last from the time of for last many centuries, as far as the economy is concerned, agriculture economy is concerned. So 40% of India's population today, it depends upon the river Ganga as far as the agriculture economy is concerned. So it has importance. It has immense importance. But what we have been doing with the river Ganga? So it was polluted, and to some extent, the pollution level of river Ganga has been addressed, but still a lot of tributaries are outfalling, and those tributaries, as I just mentioned, that river Yamuna is also one of the, which is the largest tributary of river Ganga. So now 18 tributaries outfalling into Ganga, you can deal with the pollution of the main stem of river Ganga. But what about the tributaries? So tributaries, they further have tributaries. Like each tributaries has 6 or 7 tributaries. So it is a very complicated network of rivers and tributaries. You can see that these are the major tributaries of river Ganga, and they are all merging in the main stem at different places and bringing the untreated wastewater into the main stem of Ganga. So this earlier we were mainly focusing on the main stem of river Ganga as far as the pollution abatement is concerned, but last 1 decade we adopted basin management approach, river basin management approach. So this includes all the tributaries, and we are basically trying to do some technical interventions to stop the pollution into the tributaries and then finally into the main stem of the river Ganga. Now, coming to the wastewater treatment processes, it is not a cheap option. The public bodies, agencies responsible for creating or for installing wastewater treatment systems,
it requires huge investments. It is not only plug and play system कि आप कोई चीज मिलती हो मार्केट में लाके लगा दें और पॉल्यूशन आपका रुक जाएगा. No. So this picture, it is not from India, it is from United States, but this picture shows a typical wastewater treatment plant, basically on the seaside, and it must be receiving sewage from the city where it is located. Maybe it is. Yes, please. So. Sorry sir, slide move नहीं कर रही है सर. अभी मूव करेगी. अब हो रही है? No sir. No sir, अभी तो नहीं हो रही है. ये हुई? हो रही है सर, हो रही है. अब हुई? नो सर. No sir. नो सर नहीं हो रही. No sir. मूव नहीं हो रही है सर. एक सेकंड. ये आ रहा है आपको? स्टेट ऑफ वाटर बॉडीज? नो सर. Yes sir. नो सर. ये सर आ रहा है. अरे ये है सर, स्टेट ऑफ वाटर बॉडीज है. यस सर आ रहा है. अच्छा, ये नंबर 3 स्लाइड है, ये आ रही है? So it is No, number sir. 2. नो सर. Okay, let me just Sir move हो गई. सर move. तीसरी Yes, slide sir. आ गई है सर. अब आ रही है? हाँ सर. Yes ये सर मूव हो रही है. Yes sir. इसको इसी मोड में करते हैं बस, ठीक है? इसी मोड करते हैं, मतलब बिकॉज उसमें प्रॉब्लम हो रही है शायद कुछ. जी. चलिए. सो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको गंगा रिवर बेसिन का. दोबारा से चाहें तो दोबारा से कर सकते हैं थोड़ा सा. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. ये पिक्चर थी जो मैं बता रहा था आपको अबाउट दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. दैट इट इज very big infrastructure, and this is designed very scientifically and technically to meet the requirements and to deal with the wastewater. Because today I am talking about the overview of the wastewater, so this picture will help you to understand that this is not a simple engineering. This is a very complicated and very complex kind of engineering and sciences. So this is not in India. This is outside India. This is the picture of one of the treatment plants, wastewater treatment plants in India. And this picture is basically of a particular technology which is based on anaerobic principles. आप लोग अगर साइंस बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से कोई होंगे तो they can understand what is anaerobic and what is aerobic for wastewater treatment. Any idea? Sir. Yes, sir. The reaction which occurs in the presence of oxygen is called aerobic, and which Yes. occurs in the absence of oxygen is anaerobic reaction. Yes. So this particular picture that you see, and the plant, the top view of the plant, it is based on anaerobic. As you said, that the reactions. When I say reactions, what does it mean? What kind of reactions are you imagining? Sir, bacterial. Yes, bacterial with, and for what? What is the purpose? Decompose the waste material. Yeah, it is basically to degrade the organic content of the wastewater. Not all. Only the organic content of the wastewater is to be degraded, and we have two approaches. One is aerobic, another is the anaerobic. In the anaerobic, we don't need oxygen, and in the aerobic, we have to supply oxygen from external source. So, and the purpose is to decompose the organic matter. And this organic matter is present in the wastewater because now I'm
trying to explain you only about the domestic wastewater. So in the domestic wastewater, we have organic matter, we have solids, we have pathogens, we have nitrogen, we have phosphorus. So these are 5-6 important parameters which are present in the wastewater from domestic activities, from household activities. And out of 5-6 parameters, organic matter, which is basically measured in terms of BOD and COD. BOD and COD, these are the two laboratory tests that we conduct to measure the organic matter. Now, if this organic matter, if it goes to the water body, receiving water body untreated, what will happen? If organic matter, that means carbon and hydrogen, carbohydrates, if it goes to the receiving water body untreated, if you throw away organic matter into the water body, what will happen to that water body? Water will be polluted, sir. The water will be polluted, but what will be the change in the form of that water body if discharging? Sir, it will attract algal bloom and growth of unwanted plants and algae in the water body. Yes, sir. Biological oxygen demand. The eutrophication will occur. Yes, I agree that eutrophication will occur, but eutrophication is occurring due to some other prominent reasons, not only because of the organic matter. So I want something more from you to know what is happening. If organic matter, if discharged into any water body, and that water body is clean water, suppose, अभी तक साफ था वो पानी गंदा नहीं हुआ था. The moment you discharge, the dissolved oxygen concentration of that water body will start falling down. It's dissolved oxygen. The moment Yes, sir, BOD will increase. No, BOD will not increase as such. BOD तो वो रहेगी जो हम डाल रहे हैं उसमें. जो BOD means organic matter. तो BOD तो वही रहेगी उसकी पानी की. सपोज कोई तालाब है साफ सुथरा अच्छा सा, उसमें हमने 100 मिलीग्राम पर लीटर BOD डालना शुरू कर दी, तो BOD तो उसकी वही रहेगी. बट ये कि जो उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन था उस तालाब का, सपोज वो था 5 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व ऑक्सीजन, इसमें फिश सर्वाइवल बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, 5 to 6 था. अब द मोमेंट वी एड BOD in that water body, the dissolved oxygen concentration will decline. The moment the dissolved oxygen concentration will decline, it will have impact on its flora fauna of that water body plus aquatic life. Because dissolved oxygen की वजह से ही उसकी एक water body की जो life थी वो sustain कर रही थी, अब आपने उसको disturb कर दिया. अच्छा, and who is basically declining this dissolved oxygen? कौन इसको कर रहा है कम? Who is bringing down the dissolved oxygen? BOD is the source. Organic waste. Algae, I think. नहीं, BOD is the source. BOD means organic matter. BOD तो हमने एक मटेरियल है जो डाला तालाब में, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हुई, बट वो कम क्यों हुई? उसकी साइंस क्या है? वो कौन सी चीज है जो उसको कम कर रही है? Bacteria is consuming dissolved oxygen. Now, the moment BOD is added into the water body, the bacterial population will increase because it is a food. The organic matter is a food for the bacteria. उसका खाना है. तो जब वो खाएगा,
रिप्रोड्यूस करेगा, उसका रिप्रोडक्शन एक्सपोनेंशियल होता है। ये सब नेचर ने डिजाइन किया हुआ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें। सो नाउ दिस बैक्टीरियल एक्शन will be very fast, will grow, will multiply in itself, and they have a food. तो उनको और क्या चाहिए, उनके तो मजे आ गए फिर। So now the bacterial population will increase manifolds and they will start consuming the BOD or organic matter, और जब वो रहेंगे इतने सारे तो रेस्पायर भी करेंगे, उनको रेस्पिरेशन भी चाहिए ना, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर थी पहले से, जो 5 और 6 थी, वो सब कंज्यूम कर गए। वो कंज्यूम करने के बाद फिर वो सेप्टिक कंडीशंस में ले आए उसको, तालाब को। अब वो तालाब आपका गंदा होना शुरू हो गया, कालापन आ गया उसके अंदर। दैट इज द बेसिक साइंस ऑफ दिस होल सिस्टम प्रोसेस। तो नाउ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में जो सबसे ज्यादा जो ट्रिकी पार्ट होता है फॉर द रिमूवल टू सेपरेट फ्रॉम द वेस्ट वाटर, दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। Now, this can be removed only with the help of bacteria. एक तरफ तो हमने तालाब का केस देखा कि वो एक अनकंट्रोल्ड वे में उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब नाउ वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया टू remove the organic matter, but in a controlled environment, and that environment or that system is called as reactor. जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर, इस पर जो राइट हैंड साइड पे ये जो पिक्चर है, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द रिएक्टर। अब हम कर तो वही रहे हैं जो एक नेचुरल प्रोसेस था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको, बैक्टीरिया को अलाउ कर रहे हैं टू सर्वाइव, टू मल्टीप्लाई, टू रिप्रोड्यूस, सो दैट हमारा जो हिडन एजेंडा है वो सर्व हो जाए। एंड आवर हिडन एजेंडा इज दैट द बैक्टीरिया शुड कंज्यूम BOD, whether it is 100 or whether it is 1,000 or several thousands, whatever. So this has to be properly designed. This whole system has to be properly designed as per the need, as per the specific conditions. That is called, you can say, wastewater treatment engineering. So इसमें it's not only that structure, ये जो आप देख रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर जो इसमें आपको RCC के वो नजर आ रहे हैं, it's not only that, it is basically complete process. It is complete process that has to be designed, and this is done by environmental engineers or biotechnologists or bio process engineers. Matlab, it can be done by anyone, but having good knowledge of microbiology, biochemistry, hydraulics, and basic chemistry, engineering की भी थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, तो one can do it. It's not a big deal. Now this is इसमें कोई अब कोई डाउट तो नहीं रह गया इस स्लाइड में? No, sir. मतलब स्लाइड तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, but what I explained you about the process. Now this is a full view of one of the wastewater treatment plants in Lucknow. This is a very big treatment plant, and this was constructed to stop the pollution of river Gomti in 2005 or 6. So this is still under operations, and the technology which was used in the setting up of this treatment plant, it is anaerobic. It is UASB, upflow anaerobic sludge blanket process. So one can understand, आप देख सकते हैं कि कितना huge investment होता है ये, like so much of concreting, so much of metal, so much of engineering. इतना एरिया लखनऊ के शहर के अंदर, गोमती नगर के अंदर है ये, और इसको ऑक्युपाई कर रहा है ये
और पानी को पूरा लेके आना एक जगह, वहाँ ट्रीट करना उसको, फिर ट्रीट करके फिर उसको वापस नदी में फेंकना, या नहीं फेंकना है तो उसको इफ यू वांट टू रीयूज इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस तो आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा उसको एग्रीकल्चर का. तो दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इन्वेस्टमेंट बेसिकली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट public agency to set up such kind of facilities. So एक ये एक schematic है, ये एक process flow diagram है, and this is new. It's not a new technology, but it is nowadays very much in use in India. This is called sequencing batch reactor technology. ये जो थी ये UASB है, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट प्रोसेस, जो एनारोबिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. इसमें खास बात क्या है? एनीवन हु कैन टेल द एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? इसकी या इसकी एक ही चीज है, ये इसका क्लोज व्यू है, ये इसका फुल व्यू है. कोई बता सकता है इसकी खास बात क्या है? What can be the major advantage of using anaerobic process? We don't know, sir. Okay, no problem. The major advantage of anaerobic process that it doesn't require energy, electrical energy, to reduce the pollution load. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं मिस कर गया बताना आपको. In the anaerobic process, there is no need to invest into electrical energy. And why this electrical energy is required in the case of aerobic process? So to supply the oxygen? Yes, 100% right. When you are going for aerobic process, you have to supply oxygen from external source. And for that external source, you have to provide blowers or compressors or surface heaters, which are very big and that consumes a lot of energy, lot of electrical energy. So, whereas in this case, there is no requirement of oxygen. So no energy is required. आपकी बहुत major saving हो जाती है in the case of anaerobic process. And इसकी फिर disadvantage भी हो गया. Disadvantage क्या है कि anaerobic process का जो performance removal efficiency है, it is not more than 75%. Suppose हमारी जैसे 100 BOD थी, अगर 100 BOD को हम रिमूव करने चलेंगे तो ये 75 करेगी, 75 करेगी, 25 बाहर फेंक देगी निकाल के. Still we have BOD. Whereas aerobic process, they give 95% removal efficiency. Now it is up to you to decide कि हमें करना क्या है. तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको एक छोटी सी, अगर मुझे 10,000 पॉपुलेशन के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, अगर मैं एनारोबिक पे बनाऊंगा तो उसमें मेरी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की कॉस्ट आएगी करीब 600 रुपीज पर डे, क्योंकि और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें जो प्रति पंपिंग वगैरह तो आपको करनी पड़ेगी. और मैं अगर एरोबिक पे जाऊंगा इस तरह की, तो इसका मेरा 2,800 रुपीज पर डे का खर्चा आएगा फॉर 10,000 पॉपुलेशन. तो 2,800 रुपीज पर डे आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे. नाउ यू हैव टू डिसाइड. अब हम क्या करते हैं इसमें कि हम एनारोबिक लगाते हैं सपोज, और 75% को ना करके हम 70% एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी बीओडी मीट आउट हो गई. 100 थी, 70 ट्रीट हो गई,
30 रह गई. So what we do, कि हम anaerobic में एक we have a technology, it is proven technology. मतलब ऐसा नहीं है कि वो it is not tested, it is tested full scale. Anaerobic में एक advantage है कि you get biogas because it is a closed vessel. और degradation जब होता है anaerobic process में, you get biogas, and this biogas is rich in methane gas. Methane, and methane can produce energy. It can be converted into electricity. So for that 30 remaining, आप अपना कुछ aerobic पे चले जाइए और उस aerobic के लिए जो electricity consumption की requirement है, that can be supplemented through the biogas which is being produced in the main reactor. Did you get my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is the advantage. Anaerobic की advantage है, but वो ये ना हर चीज के pros and cons होते हैं, merits demerits होती हैं. So it is up to the engineers to decide depending upon the situation, कैसा जगह है, क्या है. बहुत like we have to do a lot of permutation combinations कि यहाँ पे ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा. तो वो है because investing into treatment plant, it is a burden on the public. Then giving electrical energy, so much of electrical energy, it is also a burden on the natural resource. And electrical energy आप दे रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी तो पॉल्यूशन हो रहा होगा थर्मल पावर प्लांट्स में. Yes, sir. तो एक अगर देखा जाए तो पूरी एक साइकिल है ये. एक तरफ ट्रीटमेंट प्लांट की भी जरूरत है और हमें पॉल्यूशन को भी बचाना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को भी बचाना है. तो यहाँ पे ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स, ये जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है ना सब, इसके बहुत you have to take into account all of these things when you are designing, when you are proposing a technology कि नहीं इसको यहाँ ये लगाइए ये लगाइए. So for large cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, you can go for treatment plants that requires energy. But for medium-sized, this is my idea, my viewpoint. I'm not saying that you have to do it like that only, and I do that way only. कि जो medium-sized की towns हैं, जैसे जिसकी population up to 5 lakhs है, जहाँ पे electrical energy के issues हैं, power issues हैं अभी भी, तो वहाँ पे I think we can go for anaerobic systems और एक integrated anaerobic system बनाइए, बायोगैस को यूटिलाइज करिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, 30% उससे मीट आउट कर लीजिए, 70% एनारोबिक से कर लीजिए. आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. So this is the aerobic process which is widely in use nowadays, and this also produces very high quality effluent, but it is very much mechanical oriented. A lot of electrical energy is consumed and very high operation and maintenance cost. This case mein operation maintenance cost is not that high, but in this case it is very high. So this was the first part of my talk, like 30 minutes, 35 minutes. Now I shall be switching to something which we have done, like a sort of a case study that I would like to explain you. यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए अब आप. Any question? Any doubt? No, sir. No, sir. No. Now, I shall be now talking about the R&D project that we implemented in 2013, 2018. That was the duration of the project. And I understand most of you are faculty, like colleagues, different department, different states. So when we are into academia,
this is very important to take up, to do R&D projects, and this gives an opportunity to do something creative, innovative, and where our idea can be transformed or translated into the real scale conditions. That is the purpose. Suppose आपके पास कुछ चीज है ऐसी, I'm not saying it is in the water sector. It can be any, it can be pharmaceutical, it can be energy, it can be botany, zoology, chemistry. किसी भी फील्ड में आपके पास आइडिया हो सकता है. A lot of emphasis is now being given by the government to carry out R&D projects. You have to apply in the calls that they float, like Department of Science and Technology is the nodal agency of Government of India that supports R&D programs. Similarly, CSIR, Department of Biotechnology, and there are many ministries that directly supports R&D programs. So we as teachers, as researchers, we are supposed to participate, and this not only helps in giving confidence to our knowledge, skills, but also helps in the promotions and giving fame also. आपको एक अच्छा नाम मिलेगा कि आपने ये काम किया है. ये तो होता है हम लोगों के टीचर, सिर्फ हमारा काम पढ़ाने का नहीं है, हमारा काम रिसर्च करने का भी है, पढ़ाने का भी है. तो this type of programs will definitely help you in building a more polished career than a traditional kind of teaching and सिर्फ पढ़ाना का काम रह जाएगा आपका. And but this is not that easy कि आपको ये सपोर्ट सब मिल जाए और आप इसको काम को करें भी. So you have to make a lot of efforts in getting the projects, because it all depends how do you write it और कैसे आप इसको बनाते हैं, कैसे करते हैं. So I'm presenting one case of the project that we implemented in 2013, 2018, and this was a joint coordinated call from Government of India and European Union. When this call came, we formed a consortia, because that was the condition in the call, like in the invitation, that it has to be a consortium. What do you mean by consortium? That a mix of multiple institutions to achieve one objective. That is consortium. So consortium was formed, and we decided to participate in the call at that time and submitted proposal, and we gave the name of this project as SWINGS, Safeguarding Water Resources in India with Green and Sustainable Technology. And whenever you do any project of this scale or this magnitude, you always have to have coordinating agencies, because the consortium is big. So you have to have a coordinating agencies to administer, to manage the project. इतने सारे multiple institutions हैं, तो अब आपको एक coordinating agency भी decide करनी पड़ेगी आपस में बैठ के कि कौन इसको lead करेगा. तो luckily it was decided that AMU will take the lead where I work, and I was like appointed as the lead coordinator from the AMU side, and involving 8 partners from Indian side and 11 partners from European side, from different countries of Europe: Germany, Denmark, Spain, Slovenia, France. So this is the consortium, shaking hands with multiple agencies for achieving a particular
objective. And there was a condition that it should also have SMEs, enterprises, and local urban bodies like municipalities. ये भी उसी कंडीशन की प्रोजेक्ट कॉल की, तो हमने उनको भी रोप इन किया कैसे भी करके, आप भी आ जाइए, बिकॉज दे हैड नो इंटरेस्ट कि हम क्या करेंगे इसमें, रिसर्च प्रोजेक्ट है. बट अल्टीमेटली द यूजर्स जो हैं वो तो यही लोग हैं ना, म्यूनिसिपैलिटीज हैं. जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, तो वही यूजर्स हैं उसमें. तो ये था कि उनको भी साथ लेके चलो शुरू से. दैट वाज द आइडिया. तो यूरोपियन साइड से इसको एमएन स्पेन में एक रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा, उसने लीड किया था, और इंडियन साइड से एएमयू ने लीड किया था इसको. नाउ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्विंग्स? टू डेवलप low cost sustainable technologies for municipal wastewater treatment, reuse, minimizing energy demand as a treatment option for rural and energy scarce towns in India. ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करिए, वैलिडेट करिए, डिप्लॉय करिए या डेवलप करिए जो लो कॉस्ट हो, सस्टेनेबल भी हो, और जिसमें रिकरिंग खर्चे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम से कम हो, एनर्जी डिमांड कम से कम हो उसकी, और जिसका लार्ज स्केल पे आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन किसी रूरल एरियाज में या ऐसे टाउन्स में जहां पे एनर्जी नहीं होती है, पावर नहीं है, वहां पे हो सके. दैट वाज द मैंडेट गिवन बाय द गवर्नमेंट, एंड on this basis of objective, our project was selected out of 62 proposals. पूरे इंडिया और यूरोप से टोटल प्रपोजल्स जो गए थे वो 62 गए थे कंसोर्टियम की फॉर्म में. 62 में से 4 projects was finally selected and Swings was one of them. And obviously जब इतना बड़ा multiple agencies institutions में involved हैं, obviously the budget was also very high. और जो भी हमें स्टडी करनी थी या जो भी हमें टेक्नोलॉजी, तो वो उसकी पायलट प्लांट्स पे करना था. ये नहीं कि हम कोई लैबोरेटरी स्केल पे या बहुत छोटे स्केल पे करना है. इट हैज टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड. इसको आपको दिखाना है हमें कि विजिबल क्या है, ये चलता हुआ है, ये ऐसा है ये. तो दैट वाज अ वेरी बिग टास्क व्हिच वाज गिवन टू अस ऑन दिस कंसोर्टिया, and we started implementing this project in 2013 onwards, and it was a time bound program. When you collaborate with any international institution, तो वहां पे टाइम की बहुत कीमत है. You have to develop synergy so that time आपका वो ना हो उस तरह से. It should not be like lagging ना हो टाइम की. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. अरे आरिफ, ओके, नो चलेगा. सो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था जो हमें दिया गया, और अब हमने क्या किया उसमें बताता हूँ थोड़ा सा आपको. तो हमें लो कॉस्ट के बारे में बताया गया, तो हमने इसमें आइडेंटिफाई किया कि व्हाई नॉट टू गो फॉर वेटलैंड्स टेक्नोलॉजी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो वेटलैंड्स क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स. दिस इज वेरी सिंपल व्यू ऑफ द कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स. अभी तक जो आपने देखा था वो एनारोबिक, एरोबिक, बहुत हाई रेट सिस्टम, कॉम्पैक्टेड, लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, लॉट ऑफ कंक्रीट, तमाम दुनिया भर की चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही थी. अब हम इस दुनिया में आ गए. इट इज ए नेचुरल प्रोसेस. इट इज ए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन. व्हाट वी आर डूइंग, we are just allowing the wastewater into a shallow basin, shallow tank, where we have soil, a filter media, microbes, and vegetation, plants, पौधे.
that helps in the removal of the solids, biodegradation of the organic matter, uptake of the nutrients, nitrification, denitrification. एक ही उसमें नेचुरल तरीके से सारे काम आपके हो रहे हैं, and you are getting a very fine effluent quality and no energy requirement. कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, वेटलैंड्स के बारे में? सर जो नमी युक्त भूमि होती है वही वेटलैंड्स होता है। हाँ, जो मार्शी एरिया होते हैं वो नेचुरल वेटलैंड्स होते हैं, जो मार्शी एरियाज होते हैं। बट इसी को आप इंजीनियर्ड कर दीजिए, दैट बिकम्स कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। तो ये तो नेचर का डिजाइन है, ये हमारा डिजाइन नहीं है, ये नेचर का डिजाइन है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। तो मगर आप देखें, इट लुक्स वेरी सिंपल। एक शैलो बेसिन है 1 मीटर डेप्थ का, और उसमें फिल्टर मीडिया डाल दिया है, सैंड या ग्रेवल जो पेबल्स होते हैं, और पौधे लगा दिए, पानी एक तरफ से डाला, दूसरी तरफ से निकाल लिया, बाहर साफ होकर निकल के आ गया। बट इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसको आप जब इंजीनियर्ड करेंगे, जब इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सेट अप। तो हमने, जब उन्होंने हमसे मैंडेट दिया हमें लो कॉस्ट का, हमने कहा ये सबसे चीपेस्ट पड़ेगा हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए। और हमारे पास लैंड की कमी नहीं है, आज तो नहीं है, आगे चल के होगी, देखा जाएगा। इसी को तोड़ के हाई रेट बना देंगे फिर हम, जब लैंड की क्राइसिस आएगा। कम से कम प्रदूषण तो रुके कैसे भी करके। तो जब भी आप इस तरह की कोई R&D करते हैं बड़े स्केल पे, तो जाहिर सी बात है फिर वी ऑलवेज डू सर्वे ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स। और जो यूरोप में दिस इज ए प्रूवन टेक्नोलॉजी। तो आई विजिटेड लाइक प्लेसेस इन यूरोप या ये प्लांट्स लगे हुए हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट्स, और इसको कई तरह के से उन्होंने बना लिया है। लैंडस्केप भी बहुत अच्छा कर दिया है कहीं कहीं जगह पे। इट लुक्स लाइक ए गार्डन सॉर्ट ऑफ, जो आप पिक्चर देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये यूरोप की नहीं है, ये कहीं मलेशिया की है, बट नीचे की जो 2 पिक्चर्स हैं यूरोप की हैं। तो ये कुछ पायलट प्लांट्स के भी देखे हमने वहाँ पे, कि किस तरह की पायलट स्टडीज करते हैं लोग। तो वहाँ का रिसर्च सेंटर था, वहाँ भी गए हम देखने के लिए, उसका एफ्लुएंट क्वालिटी निकाल के देखा, सैंपल देखा। तो देखा कि सीवेज को किस तरह से उन्होंने बिल्कुल रीयूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए। तो देन कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस तरह से कि हाँ वी कैन डू इट। और हम लोग अपने कुछ अपना लोकल कंडीशंस को देखते हुए डिजाइन चेंज करके हम इसको लगाते हैं अपने यहाँ, एंड वी डू द एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल, और उसके चलते फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, पब्लिकेशन भी हो जाता है इस बहाने, और फिर टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन रहता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, कंट्री में। तो बेसिकली दिस वाज ए सॉर्ट ऑफ ए पायलट स्टडी। तो व्हाट वी डिड, हम मैं बता दूं आपको कि हमारे पास में लाइक इफ यू सी मैप ऑफ इंडिया, के हमारे पास वी हैड 3 sites in India. One is Aligarh Muslim University, where I work. Then Kalyani University, one of the partners, they also did piloting. और एक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में। तो इसने भी, तो ये ऑल ऑफ दीज लाइक साइट्स, सिंस दे वर पार्टनर्स इन दिस प्रोजेक्ट, तो हम लोगों ने मिल के काम किया। हमने अपना लगाया, उन्होंने अपना लगाया, उन्होंने अपना लगाया। तो हमें डिफरेंट रीजन्स में भी काम करना था। तो ये सब चीजें ऐसे ही होती हैं R&D प्रोजेक्ट में, बिकॉज R&D प्रोजेक्ट का इट्स नॉट ओनली एकेडमिक नेचर नहीं होता, उसका ये होता है कि आप व्हाट इज द प्रोडक्ट, कि आप दे क्या रहे हैं कंट्री को या नेशन को, जिसने इतना पैसा खर्च किया, बजट इतना था उसका। तो ये दिस इज द स्कीम ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट विद इन द स्विंग्स एट AMU जो हमने काम किया। यू कैन सी के दिस इज द कलेक्शन टैंक, रॉ सीवेज यहाँ पे पूरे AMU कैंपस का यहाँ पे
पीछे एक ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से हमने इसकी लाइन ले ली। तो वेयर वी कलेक्टेड दिस रॉ सीवेज इन दिस टैंक, इट इज आरसीसी टैंक। यहाँ से हमने पंप किया पानी को, और पंप करके हम फर्स्ट स्टेज में ले गए एनारोबिक डाइजेशन में, यूएसबी में। छोटा सा बनाया, यूएसबी बनाया। दिस पिक्चर, ये पिक्चर जो यूएसबी की है नीचे वाली जो आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद वी डेवलप vertical flow concentrated wetlands, which was a very new concept, and the design technology ये सब हमने collaborative उसमें किया। European partners were involved. We came to Aligarh and many places in India, वहाँ जहाँ पे काम किया उन्होंने, और पूरा डिजाइन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सब पूरा बनता है जैसे एक तरीके से वो बना। फिर उसके टेंडर्स हुए और फिर इस तरह से काम किया। फिर वर्टिकल फ्लो किया और हॉरिजॉन्टल फ्लो वेटलैंड बनाया। फिर हमें एक एनोलिक ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी लगाई हमने डिसइंफेक्शन के लिए। अच्छा, द होल स्कीम जो गवर्नमेंट ने हमें मैंडेट दिया था, ऑब्जेक्टिव में ये कहा था कि सेल्फ सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो हमें कहीं पे भी इस रॉ सीवेज के बाद से इस 1, 2, 3, 4 इन चारों स्टेप में कहीं भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता ना पड़े। दैट वाज द मैंडेट गिवन। पूरा सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे भी हैं, लगाना चाह भी रहे हैं, तो अपने खुद प्रोड्यूस करिए आप। तो हमने इसको डिसइंफेक्शन को सोलर ड्रिवन कर दिया था, हमने सोलर पैनल से लगा दिया था। तो दिस वाज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, नोवेल आइडिया ऑफ यूजिंग डिसइंफेक्शन विद द हेल्प ऑफ एनोडिक ऑक्सीडेशन। तो ये उसके पिक्चर्स हैं रियल स्केल के। एनारोबिक है पहला, फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं है कि पानी बैच ऑपरेशन में आता है, पानी हर समय 24/7 चल रहा है इसमें। और ये फिर उसका फुल व्यू है वर्टिकल वेटलैंड्स का। ये फिर हॉरिजॉन्टल वेटलैंड्स हैं। ये मतलब हाउ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो अंतर है वो यही है कि उसकी जो हाइड्रोलिक्स है, जो फीडिंग मैकेनिज्म है, वो डिफरेंट है बस। ठीक है, प्रोसेस वही रहता है प्लांटेशन का, और पेबल्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और फाइनली पानी आपका ट्रीट होकर बाहर निकल गया। यहीं पे नियर बाई वी हैव ए साइट फॉर एग्रीकल्चर, तो वो फार्मर्स सारा पानी हमारा ले लेते हैं। अब अगर आप देखें उसकी जो रिजल्ट्स हैं, ये हमारा 6 मंथ्स का एवरेज कंसंट्रेशन है। तो बीओडी हमारी 170 आती है रॉ सीवेज में एएमयू कैंपस में, और विच इज वेरी नॉर्मल इन इंडियन कंडीशंस। तो लास्ट में हमारी जो बीओडी निकल रही है वो नील आ रही है। You can see the picture of the samples at different stages. This is the raw sewage, जो black one है, ये middle है, after the USB anaerobic, और फिर उसके बाद ये wetlands के बाद ये है पानी। So this water is free from all the pollutants. बल्कि हमसे DST ने कहा था, मतलब it is in writing, you have to make this water for potable purpose. तो हमने इसको मतलब वी कैन से कि हमने इसको पोर्टेबल लेवल पे लिया है, बट वी विल नेवर रिकमेंड कि आप हम इसको ड्रिंक करें, बिकॉज यू नेवर नो कि इसमें ट्रेसिस जो पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं। लॉट ऑफ माइक्रोपॉलिटेंट्स इसमें हो सकते हैं जो हमने, हमारा मैंडेट नहीं था, हमने टेस्ट भी नहीं करा इसके, इसलिए हम वी विल नेवर रिकमेंड इट। फिर हमने एक और इसी में ही स्विंग्स का एक और वो था कि एक और वेटलैंड लगाइए आप। तो ये फ्रेंच टाइप वेटलैंड्स था, इसका इसमें और उसमें अंतर है। और इसमें हमें कोई प्री ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता एनारोबिक, इट कैन बी डायरेक्टली ट्रीटेड। ये भी एक लगाया। और इसकी हमने जो एफ्लुएंट था, इसकी हमने ट्रीटमेंट प्लांट साइट पे फिश रेयरिंग करी। तो पानी को यूज किया फिश रेयरिंग के लिए। तो उसका देखा कि क्या इम्पैक्ट है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द फिश। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसके हमारे पास फिश के लिए। दिस इज द full view of the treatment facility research station, you can say, at AMU under the project swings. So this is the sump जो मैंने अभी बताया आपको, रॉ सीवेज पूरे AMU कैंपस का आता है। इसके पीछे एक प्लांट है AMU का, दैट इज अ फुल स्केल ट्रीटमेंट प्लांट। वहां से हमने एक लाइन लेके रॉ सीवेज की अपने यहाँ पे पानी को कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कलेक्शन के बाद देन वी टेक इट फॉर USB और फिर वर्टिकल फ्लो और
it looks very green or eco-friendly. No noise, no vectors, no like breeding of mosquitoes, कुछ नहीं है इसमें. It is a complete black box. पानी नजर भी नहीं आता. सिर्फ जो ट्रीटमेंट के बाद पानी निकलता है वही नजर आता है. जो उससे पहले पानी नजर नहीं आता. This is the full view of the vertical subsurface. You don't see water on the top of it. पानी ही से इसमें feed हो रहा है, and it is going down, vertical flow. It is trickling down. This is horizontal flow, and we used Canna indica, iris, Phragmitis carca, Phragmitis australis. These are the macrophytes which are locally available. ये सब करते हैं. Solar driven disinfection systems, ये self-sustainable बनाना था. So this is the anodic oxidation machine that we received from one of our partners based in Germany. और इसको पूरा हमने solar driven किया. ये disinfection is very important component in the whole treatment scheme when you are dealing with the municipal sewage. So now academically अगर हम बात करें तो like what are the major scientific achievements, outcomes? So it is very old though. अभी हमने इसको update नहीं किया है. So we filed one patent, publication, 10 international journals, conferences, book chapters, PhDs हुई हैं बहुत सारी. इंडिया में भी हुई, यूरोप में भी हुई. वहाँ के एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ गए, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आए हमारे पास. PhD के भी आए, मास्टर्स के भी आए. मोबिलिटी बहुत हुई है. इंडियन साइंटिस्ट वेंट टू यूरोप, यूरोपियन साइंटिस्ट केम टू इंडिया. SRF भी मिल गए थे हमें, JRF भी मिल गए थे हमें. तो ये सब चीजें इसके मतलब आपको you can say these are all sideline benefits of when you are holding such kind of projects. फिर ये इसका जब प्लांट ये बन गए हमारे, ये टेक्नोलॉजी हमारी एस्टेब्लिश हो गई, पब्लिकेशन हो गया, तो फिर इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में. लाइक पीपल दे केम टू नो एंड दे स्टार्टेड sending us queries कि हम इसको कर सकते नहीं कर सकते. So these are the places where we have replicated this strange technology in India. Many places like in Gujarat, Madhya Pradesh, and Himachal Pradesh, Bilaspur, Mandi, and in Bengal, West Bengal, Lucknow, Kanpur, many places, and still like a lot of plants are coming up based on this concept. So this is the outcome, the major outcome of the project, that it is being replicated and it has been adopted by the government agencies as one of the very viable technologies and very sustainable, and the investment cost is also very competitive, very low compared to the other systems. ये एक हमने लखनऊ की टाउनशिप का प्रोजेक्ट किया था, which is like a private township है, उनका प्रोजेक्ट किया था. तो you can see the treatment plant within the township area. उनका गार्डन था, उसने कहा कि हमें यहीं पे, हमारे पास लैंड है, यहीं पे बना दीजिए आप. So this is what we did in Lucknow. This is the latest treatment plant, full-scale treatment plant that we have done. It is in Pondicherry, and it is 700 KLD, which is very big, like for the entire campus of Pondicherry University. Or this has been commissioned, and it is also producing very good results. ये है इसका full view of the treatment plant. You can see. ये रॉ सीवेज है जो आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कैंपस का, और ये पानी जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है अभी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द स्विंग्स, ये ट्रीटमेंट प्लांट से पानी बाहर निकलता है. ये So recently I was approached again by Pondicherry University what to do with this huge quantity of treated water, because this university is just on the side of sea there. So now they are thinking to reuse for
हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग का, बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज कैंपस, उनके जो गार्डनिंग में या हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होता है पानी। These are the results of the performance of the Pondicherry treatment plant, which were tested by the local PWD department, and they sent to me. You can see this BOD is about 4.8 milligrams per liter, which is very low. As per the CPCB standard, it should not be more than 30, but here we are producing 4.8. And incoming is 148, 145. So you can easily understand the level of the treatment, and the performance has been further improved. This is last year, 2023, and recently I got to know that the BOD has came down further, the effluent BOD. Otherwise, this is very difficult to achieve in other treatment systems. A lot of issues are there. This is another treatment plant that we did in Morbi in Gujarat, and for the JNV, this is also producing very high quality effluent. This is the layout plan and how it looks like. Like these are the wetlands, stage 1, stage 2. This is the layout plan of the treatment plant that we recently did for Jhansi school. There is a school, government school, big school, and Ministry of Defense. This is what we have done for Jhansi. One of the magazines, very famous, like in the water area, published by IWA, International Water Association, they have published an article that mentions about the swings, its impact in 2023, and it shows the pictures. So this was again like as part of the dissemination of the R&D projects, what we have done. Now that was about the swings. So if you have any question, this is for the second part, and I still have 20 minutes, so you can ask any questions about swings or wetlands or how we have done it and what are my experiences about doing the projects. कुछ पूछना हो तो बताइए, 2-3 मिनट. यस सर. सर आपके एक्सपीरियंसेस और सबसे बड़ी चीज सर जो चैलेंजेस क्या क्या आए थे आपके इस ड्यूरेशन में 5 इयर्स के आपके इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में? To be very honest, as far as the consortium part is concerned, जो हमारे partners थे इतने सारे और उनको पूरा coordinate करना और पूरा management करना, that was not a big challenge. Like we all remain very friendly in doing this project, but the biggest challenge I would like to share with you the administrative issues. Like you are in academic institution और यहाँ पे फिर हम लोगों के जैसे like we don't get funds in one go, unlike Europeans. हमारे क्या होता है, जैसे 4 साल का प्रोजेक्ट था तो हम लोगों को पैसा मिलता है टुकड़ों में कि 1 साल आप ये ले लीजिए, इसे खर्च करके यूसी जमा करिए, यूसी के बाद फिर आपको सेकंड ईयर की ग्रांट रिलीज होगी. बट उसका जो टाइमिंग है वो बहुत चैलेंजिंग है. मतलब आपको तो सिंक्रोनाइज करना है यूरोपियंस के साथ शोल्डर टू शोल्डर, बट आप कर नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज के जो फाइनेंशियल पार्ट है उसका, फंड्स का फ्लो है, दैट इज नॉट लाइक इन लाइन विद द यूरोपियंस. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और समहाउ वी ओवरकम, और कैसे भी करके हमने उसको काम किया और परसुएशन किया. अदरवाइज देखिए, जब आप इतने ऐसे कुछ भी काम करेंगे और स्पेशली आप जब फैकल्टी हैं कहीं पे भी, तो ये तो आप मन बना के चलिए पहले से कि चैलेंजेस बहुत तरह के होंगे, उसकी वैरायटी बहुत होगी, अलग
तरह तरह के लोग होंगे, और सबसे बड़ी बात ये हो कि आपके इंटरनल चैलेंजेस बहुत होंगे आपके लिए, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा. Did you get my point? Yes, sir. तो बट ये कि इफ यू आर प्रोफेशनली सेटिस्फाइड विद द आउटकम, तो सारी बात एक तरफ, आपका सेटिस्फेक्शन एक तरफ. तो एएमयू, हाँ एएमयू ने कोऑर्डिनेट किया था, तो हमारे पास ज्यादा चैलेंजेस थे. हर पूरा चैनलाइजिंग हमारे थ्रू था पार्टनर्स का, तो वो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी मसले आते हैं. There are many things that we can share on separately sometime, है ना. चलिए, तो फिर अब ये, but this gives you lot of satisfaction at the end of the day when suppose ये जो मोरबी, रतलाम, कलबुर्गी, कोलार, बिठूर, झांसी, ये सब जो प्रोजेक्ट्स जब आपके रेप्लिकेशन होने लगा, तो दैट इज द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमने कुछ किया है. पब्लिकेशन तो ठीक है, वो हमारा एक एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो गया, बट व्हेन पीपल स्टार्ट सेंडिंग यू क्वेरीज एंड दे से नो वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, वी वांट टू डू इट. कि गवर्नमेंट सिस्टम में किसी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. एनीवे, तो अब वो 2018 के बाद व्हेन दिस कंसोर्टियम वाज देयर, तो फिर ये एक कॉल और आ गई थी, और वो कॉल दैट वाज बिगर देन दिस, और उसका मैंडेट कुछ अलग तरह का था. तो देन वी पार्टिसिपेटेड इन नेक्स्ट कॉल फॉलोड बाय द स्विंग्स in 2019, and we got this project, and this project is Pavitra. Now in this project Pavitra, this is under Horizon 2020 framework. Swing जो था वो FP7 में था, ये Horizon 2020 है. Again from Indian side it was funded by DST, and we gave a name of this project as Pavitra, Potential and Validation of Sustainable Natural. And तो इसकी जो, इसमें बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था इसका प्रोजेक्ट का, और स्विंग से बड़ा था ये प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो. तो this was started in 2019, but because of the COVID, the project was stalled for some time, and it is going to be completed in 2024, December 2024. That is the official deadline to complete this project, and we are almost through with this project. ये कंसोर्टियम था इस प्रोजेक्ट का, 7 countries from Europe and 11 partners from India, NIRI, Nagpur, IIT Kharagpur, IIT Dhanbad, Symbiosis University, Pune, then Namami Gange was also partner in this project. इस तरह से चला ये प्रोजेक्ट, और it went very well. Some of the partners were old, like from the swings, and some of the partners were new in this project. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स से प्रोजेक्ट की बहुत ही डाइवर्सिफाइड, वेरी लाइक ओपन ऑब्जेक्टिव्स. इसमें नॉट ओनली डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी बट आल्सो डेवलपमेंट, उसका फिर डेमोन्स्ट्रेशन का ट्रेनिंग, उसकी अवेयरनेस, बहुत सारी चीजें थी इसमें. ये 14 पायलट प्लांट से हमने स्विंग्स में तो कुल we did only 6 pilot plants, but in the Pavitra we have done 14 pilot plants at different locations in India. Yeah, this is this was very big project, I should say, and the results are amazing. We have done rainwater harvesting, we have done electrochlorination, we have done sensors development, or SBR, or algae treatment, taking the help of algae for the wastewater treatment, that is micro algae technology. Then fecal sludge का भी हमने किया है इसमें काम. तो ये काफी, मतलब it is a very wide and a very impactful project when compared to swings, and this is likely to be completed in December 2024.
So I stop here only, and if we have any questions, answers that we can discuss. और मैं आपको एक पिक्चर दिखा सकता हूँ स्विंग्स की भी, उसकी पवित्र की भी, जस्ट सेकंड होगी तो नहीं, आई डोंट थिंक. So I stop here, and if you have any questions. Oh, thank you, sir. So, ठीक है, I take leave then. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Sir, sir. good morning, sir. Thank you, Thank you sir. so much, Sir, sir. I have Thank a you, sir. question. Yes, please. Go ahead. Sir, I, Dr. Snelata from Lucknow. Sir, I want to know how Thank to you, sir. just store the RO useless water, because there is so much wasted of this water. Which water? RO वाला जो पानी है, जो उसको आप जिससे हम लोग, हाँ, जो घर में लगता है आरओ. जी, तो उसको भी तो हम लोग चाहे तो मतलब किसी तरीके से उसको रीयूज कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं. तो क्या वो बेनिफिटेड होता है किसी प्लांट्स के लिए या कई इस तरीके की चीजों के लिए? नहीं, एक तो आरओ का वो पानी होता है जो ट्रीटेड होता है, जिसको हम पीते हैं घर में. एक होता है जो उसको रिजेक्ट होता है, निकलता रहता है हर समय. तो आप किसकी बात कर रही हैं? रिजेक्ट वाले थे सर. तो रिजेक्ट वाले में it is not recommended at all for any kind of reuse, because that has lot concentration of total dissolved solids. अगर आप उसको किसी गार्डन में अपने इस्तेमाल करेंगे किसी भी फ्लावरिंग के लिए, तो वो पूरे उसको सॉइल को भी खराब कर देगा और उसके प्लांट को भी खराब कर देगा वो, बिकॉज दैट हैज लॉट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जिसको हम TDS कहते हैं. उसका एक थंब रूल ये है कि अगर हमें 1 लीटर साफ पानी चाहिए आरओ का, तो जो लिटरेचर कहता है वो ये कहता है कि 1 लीटर पानी बनाने के लिए 8 लीटर रिजेक्ट निकलता है. तो it is not recommended at all. You cannot reuse for any good purpose, except कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते. इवन फ्लोर वॉशिंग इज नॉट रिकमेंडेड. आपके फ्लोर में अगर आपका फ्लोर विट्रीफाइड टाइल्स हैं या मोज़ेक है, तो वो उसमें कुछ समय के बाद आपने अगर इस्तेमाल कर लिया, तो इसमें स्केलिंग हो जाएगी. आपके पानी में वाइट पैचेस, उसके फ्लोर के ऊपर वाइट पैचेस पैदा हो जाएंगे आपके. Okay, sir. So there is no management of RO rejected water. No, it is not at all. And NGT का बहुत सख्त वो है कि हो सकता है कि ये जो आरओ का जो चल रहा है ना, इसको शायद वो कुछ they may take some action now on RO reject. सर बंद कर देना चाहिए, thank you. ऐसे पानी वेस्ट कर रहा है. हैं? सर कह रहे हैं बंद कर देना चाहिए, ऐसे बनाने के लिए कंपनियों को ही लाइसेंस ना दिया जाए सर. वो देखिए, मैंने आप ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह की बात करने का, बट ये सब चीजें जो होती है ना, एक पूरी मतलब देखा जाए तो पीछे कॉर्पोरेट वर्ल्ड होती है पीछे इसके, जो उसको प्रमोट करती है. अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले कौन जानता था बिस्लेरी और मिनरल? ऐसा नहीं बात. सब लोग पानी पिया करते थे नल का, और जो पानी आता था टैप वाटर में. सर अब तो छोटे छोटे गांव में भी लोग कोई टैप वाटर नहीं पी रहा, हर कोई RO वाटर ही पी रहा है. तो यही तो चीज समझनी है सर. तो जैसे RO लगा है, अगर हम RO हटाते हैं और वाटर, जैसे आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो बताया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो घर में पानी आ रहा है वो भी तो साफ नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए? आपके देखिए व्हाट वी कैन डू. जो हमारे पास सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड है, विच इज वेरी सेफ एंड इवन सेफर देन RO. अगर हम पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको बॉईल करके छान लीजिए बस. ओके, जस्ट ओनली टैप वाटर को ही बॉईल कर लें और उसको, हाँ, और बोतल में रख लीजिए, भर के रख दीजिए, चाहे उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए चाहे बाहर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें. कि उसको बॉईल करना, दैट इज सफिशिएंट इनफ.
तो सर बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, क्योंकि बॉईल करने में जैसे वाइट, बहुत ज्यादा वाइट आ जाता है उसमें। नहीं, बॉयल, देखिए बॉयल करने से सबसे पहला जो मरेगा वो बैक्टीरिया ही मरेगा। ओके। हाँ, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पानी में आज के समय में, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हमारा काफी पॉल्यूट हो गया है, 100 फीट में तो अलीगढ़ में पानी पॉल्यूट है, अब हम 200 फीट पे चले गए। ये पूरी यूपी का यही हाल है इस वक्त। जी तो सर। अगर हम बॉईल करते हैं तो पानी के अंदर आजकल हार्डनेस बहुत आ रही है, ये सर वाइटनेस बहुत ज्यादा हो जा रही है, अगर बॉईल कर लेते हैं सर पूरा वाइट वाइट हो जाता है। वाइट वाइट रहता है, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पानी आप पियेंगी वो तो आप डिकेंट करके पानी को बोतल में करके पियेंगी, उसका वाइटनेस वाला पोर्शन उसमें नहीं आएगा। हाँ, जिस 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 जिसमें आप गर्म करेंगे वो पोर्शन वो वाइट हो जाएगा, ये सर वो वाइट हो जाता है वो वाइट पूरा। हो जाता है। हाँ, तो प्लस ये कि आजकल देखिए आप बाथरूम्स में जो हमारे बकेट्स हैं वो सब पूरा वाइट वाइट हो जाता है। यस यस। तो दैट दिस इज इंडिकेशन दैट वी आर सर गेटिंग। सर बताइए। उसमें जो डिजॉल्व जो एसिड डिजॉल्व मिनरल है वो हमारे सेहत के लिए खराब नहीं होगा सर? देखिए उसकी भी एक लिमिट है, हमें अप टू 500 मिलियंस पर लीटर TDS इज परमिसिबल, बट बियॉन्ड दैट। का सर हमने TDS जो है 400 to 500 ही हम रखते हैं। हाँ, बस ठीक है तो वो। सर ठीक है। मतलब वो देखिए 400 to 500 जो है ना, वो भी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ना हो उसका। नहीं सर 300 to 400 कराते हैं, वो बढ़ के सर 500 हो जाता है। उसको आप मतलब ये रखिए 250 करिए उसको। और ओके। कभी कभार किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा मशीन या कोई बात हो तो आप उसको 400 500 तक अलाउड है, बट नॉर्मली इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 300। सॉरी, ओके। इन नॉर्मल उसमें सिनेरियो में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर beyond 300, like up to 500 or more than 500, that could be harmful to your health. थैंक यू सर। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। हाँ जी सर, जब हमारी RO की हम सर्विस वगैरह कराते हैं, फिल्टर वगैरह चेंज कराते हैं, तो उसमें जो TDS है 100 से भी कम रह जाता है स्टार्टिंग में। नहीं तो आई थिंक फिल्टर आपका चेंज करवाइए अपना। नहीं, चेंज कराने के बाद जो TDS आ रहा है ना, वो 100 से भी कम रह जाता है, वो कहते धीरे धीरे बढ़ने लगता है फिर। नहीं, अभी क्या है ना कि फिल्टर्स ऐसे आने लगे हैं कि आप उसको बोलिए वेंडर को कि मुझे 200 TDS चाहिए, अब वो फिल्टर उसी हिसाब से लगाएगा। ओके, ठीक है सर। वो क्या करता है, गड़बड़ी के आपको 100 वाला फिल्टर लगा देगा, और अगर आपका 100 वाला फिल्टर होगा वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हाँ, वो भी अच्छा नहीं नुकसान है। देगा। वो क्या करता है कि 100 वाला लगाओ और हफ्ता 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो 100 वाला 200 पे आ जाएगा अपने आप ही, तो वो अपने पैसे बचाता है इस चक्कर में। ठीक है सर। ये हमारी Thank you. बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई हैं, मतलब नथिंग टू डू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच Thank सर। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। वापस सबसे करा मैं अभी 10 तारीख को निकल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर हैं क्या? मुझे कुछ पूछना था। मेरा नाम राजकुमार है। हाँ, पूछिए, अभी टाइम है हमारे पास, मेरे 5 मिनट है। मेरे घर पर सर सादा हैंडपंप है, उसका TDS मैंने चेक कराया तो 110 आता है। सादा हैंडपंप है, 110 फीट उसकी गहराई है लगभग। अगर आप माइंड न करें, किस क्षेत्र की बात है ये है मेरे यहाँ पर बराबर में नरोरा पड़ता है, नरोरा से गंगा जी को पार करके संभल जिला पड़ता है। अच्छा जी। 100 TDS आ रहा है। 110। हाँ, मतलब 110 आ रहा है तो बहुत ही, तो मतलब आई थिंक बड़ी यूनिक साइट है 100 आपकी। फीट से 100 फीट से नीचे के जो नल है उनका 110 आता है, और जो ऊपर के हैं 40-50 फीट पर जिनका पानी आ रहा है उनका ज्यादा आता है। देखिए 100 वाला तो आपको मतलब थोड़ा सा, अगर आप इफ इट इज पॉसिबल तो 40 वाले को और 100 वाले को मिला भी कीजिए आप पानी। अच्छा।
पीने के लिए आप कर सकते हैं, बाकी अपने जो भी रोजमर्रा के घर के काम है वो आप 100 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है। बट जो पीने का पानी है वो आप ये करिए कि 100 वाले को और 40 वाले को मिला के पीजिए। अच्छा, और चेक कर लीजिए एक बार 40 वाले में और 100 वाले में मिला के, आधा वो ले लीजिए आधा वो ले लीजिए कि कितना कितना आता है मेरा टीडीएस। मतलब मैं भी यही करता हूँ अपने घर में कि मेरा जो 200 फुट पे बोरिंग है उसका टीडीएस कम है, ठीक है, उसका उसका टीडीएस कम है, और नहीं सॉरी उसका टीडीएस ठीक ठाक है, 300-400 है, तो मैं आरओ को और उसको अर्थात दोनों को 200 मिला के के पीता आसपास हूँ। रहना चाहिए, ठीक। 200 का तो रहना चाहिए, बिकॉज आपके लिए मिनरल्स की भी, आपकी बॉडी को, हेल्थ को चाहिए मिनरल, सफिशिएंट मिनरल्स चाहिए, वरना तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी बहुत सारे मिनरल्स की, और वो डेफिशिएंसी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी फिर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। Good morning, sir. I want to ask you one question. यस यस प्लीज। Sir, I want to know the commonly used microbial species, any bacterial, algal species, or fungal species which are used to treat wastewater. There are many species, like there's a long list of bacterial species. Like Bacillus is a very prominent bacteria that is basically responsible for the BOD reduction. And Yes, sir. similarly, Species, Bacillus की कोई species हो जो commonly use होती है? उसके बारे में मतलब मैं भी ऑफ हैंड नहीं बता सकता आपको। आई कैन शेयर विद यू लिटरेचर, because we don't go to that extent कि कौन सी species में ज़्यादा major role play कर रही है। Same is the case for the nitrobacters and same is the case for the carbon bacterial action. So, but there is a literature available that tells about the species which are prominently they work and they are responsible for microbiological reactions taking place. You can contact me on email. I can share with you the literature. Okay, sir. Thank you. सर एक क्वेश्चन मेरा है। Because सर मैं कह रहा हूँ कि सामान्य जो बोरिंग होती है 150-200 फीट है, यदि यह बोरिंग 400 फीट के आसपास हो तो क्या पानी शुद्ध रहेगा? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि आपका 150-200 वाला जो है वो उसका लेवल क्या है पॉल्यूशन का इस समय। मतलब आप उसको पहले जांच करवा लीजिए, अननेसेसरी आप 400 पे करवाएंगे तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले आप जांच करवाइए कि उसके जो सैंपल है उसमें अल्कलिनिटी कितनी है, पीएच कितनी है, हार्डनेस कितनी है, टीडीएस कितना है उसका, उसके अंदर सल्फेट की मात्रा कितनी है, ये सब जांच करवा लीजिए। 150। अच्छा, इसमें एक काम और करना पड़ता है आजकल हम लोगों को, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमें पैथोजेंस की भी जांच करानी पड़ रही है अब। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो 100-150 फुट पे भी मिल रहा है हमें नीचे, विच इज वेरी लाइक रेयर काइंड ऑफ सिनेरियो। तो अगर हम उसकी जांच करा लें 150 वाले उसकी, और इन पैरामीटर्स के लिए करवा लें, अगर ये पैरामीटर विद इन द रेंज है जो BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो देन आपको डीप जाना पड़ेगा, सेकंड स्ट्रेटा में जाना पड़ेगा। और सेकंड स्ट्रेटा जाहिर सी बात है आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि वो बोरिंग करवाना, उसकी फिर पंपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, पंप की जो कैपेसिटी होगी वो भी ज्यादा बड़े उसका लगेगा आपका। जांच करवा लीजिए एक बार। ठीक है, आई स्टॉप देन, आई एम क्विटिंग, एंड इन केस इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्वेरीज, सो यू कैन email me directly. That's I will be happy to answer all of your questions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. अरे भाई सर चले गए।